Welcome back, my dear kids. How are you? I hope you all are fine. So now we are going to start another chapter of our English Reader book by Vani Publishers, and the name of the book is English Reader Hindi Anuvad Sahit Class 3. Now we are going to start chapter number 4, and name of the chapter is The Taj Mahal. अब इस चैप्टर में हम ताज महल के बारे में पढ़ेंगे. The Taj Mahal is the most beautiful building of our country. It is one of the 7 wonders of the world. Thousands of people come to see it from all over the world. It stands on the bank of the river Yamuna in Agra. It was built by Mughal Emperor Shah Jahan. He built it in the memory of his beloved wife Mumtaz Mahal. He loved her very much. It is made of white marble. It looks very beautiful in the moonlight. 20,000 laborers took 20 years to complete it. On the full moonlight, the Taj Mahal looks most beautiful. There are 4 minarets on its 4 corners. There are beautiful gardens and fountains front of the Taj. It is really wonderful. Inside the Taj, there are 2 graves of Shah Jahan and Mumtaz Mahal side by side. तो चलिए इसका हिंदी अनुवाद समझाती हूँ. ताज महल हमारे देश की सबसे सुंदर इमारत है. यह देश के 7 अजूबों में से एक है. पूरे विश्व से देखने के लिए हजारों लोग आते हैं. किसे देखने? ताजमहल को. यह आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है. यह मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था. उसने इसे अपनी प्रिय रानी मुमताज की याद में बनवाया था. वह उससे बहुत प्रेम करता था. यह सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है. यह चंद्रमा की रात को बहुत सुंदर दिखाई देता है. 20,000 मजदूरों ने इसे 20 साल में पूरा किया था. पूरी चंद्रमा की चांदनी में ताज बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है. इसके चारों कोनों में 4 मीनारे हैं. ताज के सामने सुंदर बाग और फुवारा है. यह वास्तव में अद्भुत है. ताज के अगल बगल में शाहजहां और मुमताज की 2 कब्रें हैं. Now time to do some exercise. Exercise 1. Answer the following questions. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. My dear kids, exercise 1 you have to do by yourself. Now move to next exercise. Exercise 2. Complete the sentences. वाक्यों को पूरा कीजिए. Number A. The Taj is the most beautiful dash of India. तो यहाँ आएगा building. It stands on the dash of the river Yamuna. तो यहाँ आएगा बैंक. He loved his queen dash very much. तो यहाँ आएगा मुमताज महल. There are 4 dash on its corner. तो यहाँ आएगा minarets. Now move to next exercise. Exercise 3. Write T for true and F for false. The Taj Mahal is one of the 7 wonders of the world. सही बात है. 7 अजूबों में से एक है. It stands on the bank of the river Ganga in Allahabad. No, this is false. It was built by Mughal Emperor Shah Jahan. सही बात है. शाहजहां ने इसे बनवाया था. तो मैं यहाँ पर T लिखूंगी. It was built in the memory of Noor Jahan. No, this is false. Now move to next exercise. Exercise 4. Tick write the correct word and complete the sentences. Number A. The Taj Mahal was built by Mughal Emperor जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब. तो सही आंसर है शाहजहां. The Taj Mahal looks very beautiful in sunlight, flute light या moonlight. तो सही आंसर है moonlight. Now exercise 5. Complete the following words. चलिए अब वर्ड्स को पूरा करते हैं. BEAUTIFUL
beautiful, W-O-R-L-D, world, C-O-U-N-T-R-Y, country, R-I-V-E-R, river, P-E-O-P-L-E, people, W-R-I-T-E, ride. My dear kids, rest of the exercises you have to do by yourself. My dear kids, I hope you like this video. Stay tuned for next video. Till then, take care. Bye-bye.